एफएमसीजी स्पेस पर एक खास चर्चा करने के लिए नीलसन आईक्यू के इंडिया एमडी सतीश पिल्लई हमारे साथ बने हुए हैं। मॉर्निंग मिस्टर पिल्लाई, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत दिनों से इनफैक्ट लगातार पिछले कई हफ्तों से हम ये बात भी कर रहे हैं कि वॉल्यूम ग्रोथ जिस तरह की दिख रही है एफएमसीजी पैक में, स्पेशली आपके इस स्पेशल रिपोर्ट में 2-3 कंक्लूड्स आर वेरी इंपॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग। आपसे और डिटेल में समझना चाहेंगे। आपने दो चीजें हाईलाइट की, एक तो डबल डिजिट ग्रोथ देखने को मिल सकती है Q2 में, और इस पूरे साल फुल ईयर के लिए अगर आप बात करें, इनफैक्ट डबल डिजिट ग्रोथ पूरे इस फुल ईयर के लिए आप बात करें, और स्पेशली अच्छी स्ट्रॉन्ग ग्रोथ आपको मेट्रो सिटी से देखने को मिल रही है। और कौन सी इंटरेस्टिंग ट्रेंड्स है इस पूरे रिपोर्ट में? So overall trends are interesting, especially अगर compare करेंगे first half of the year, first quarter के साथ, even last year के साथ. तो pack size continues to drop, which is a story which has been covered a lot and everybody talks about it. But I think if you see the number, the units itself rising tells you कि volume growth जो है in certain areas are picking up, which is a very positive sign. जैसे आपने बोला metro area, so urban growth is better than rural growth. But the interesting story is not the large metros, but the mid-sized ones which are driving it. So that is an interesting story. In some ways, that actually tells you that the health of the economy seems to be improving. So I wouldn't call this rays of hope, the glimmer of light here, which actually gives you an opportunity to grow. And the third big thing is small manufacturers. Kafi sare quarters say what we've been watching is the smaller manufacturers, they're actually declining. And this is the first quarter where we see them growing as well on the volume side. तो benefit है थोड़ा obviously because of the cost of goods arbitrage compared to longer and the larger and medium, but still it is a great sign in terms of the small manufacturers, the actual growth that we're seeing from a volume standpoint, not just a price led. It is still largely price led, right? Those two things are very, very critical. Or urban, especially in the smaller, not the large metros, not the big four, the other ones, the growth there is actually a very positive story, which actually makes us believe second half of the year देखेंगे, second half हमेशा first half से ज़्यादा grow करता है because the post monsoon है, and then there is festival season. So जो momentum जो है, that is actually quite positive, which gives us hope कि second half पे जो growth होगा will outperform the first half. So overall भी 8 to 10% growth करेगा, like opportunity है, that's our prediction. मिस्टर पिल्लाई, गुड मॉर्निंग। ऑफ कोर्स 3 बड़ी चीज़ें आपने बताई, और सबसे इंटरेस्टिंग यहाँ पर जिस तरह से आप बता रहे हैं कि ज्योग्राफिकली अगर देखें अर्बन मार्केट्स में काफ़ी हद तक रिवाइवल है, कंजम्पशन प्ले जो है अच्छा नज़र आ रहा है, स्मॉल मैन्युफैक्चरर्स ने ऑफ कोर्स 3 क्वार्टर्स के डाउन ट्रेंड के बाद अब मजबूती देखी है। ऐसे में कंजम्पशन स्टोरी को फॉरवर्ड लुकिंग कैसे आप देख रहे हैं, क्योंकि कंजम्पशन में जिस तरह से बढ़त नज़र आ रही है, आने वाले क्वार्टर्स के लिए किस तरह के यहाँ पर पैटर्न्स क्रिएट होते हुए दिख सकते हैं? Correct. So वो ट्रेंड देखते समय हम वैल्यू प्रोजेक्ट करते हैं, not just volume. So we look at the value of it because unit measurement across every manufacturer, across every company is very different. So there is no unique measurement around it. So value growth है 9 to 10%. And where actually see the pockets of where it's growing. One is on the food side versus non-food. Non-food में apart from other personal care around deodorants and stuff, which is actually increasing. But that is also because people are coming back to office. On the food side, on the staple side, if you start seeing growth, right, that is actually structural. So you can build on that to be able to predict on to the future for the next year. So that's positive. The second positive, again, the small manufacturing side is quite critical, right? For our economy to be able to grow in a healthy way, we want to make sure the health of the small businesses. There are in deeper geographies that actually has other contagion effects from employment and so on and so forth. So it is those type of stories actually helps us believe that the second half will be better. Now, this doesn't mean that we are out of the woods necessarily. I think the external environment is what it is. It is continually changing. But you start looking at more structural pieces that are positive, and the trend is positive. That becomes a good story to kind of lead into the second half of the year. पिल्लाई, वेरी क्विकली एक और चीज़ समझना चाहेंगे। आपने ये हाईलाइट भी किया इस रिपोर्ट में, यानी एफएमसीजी के आप जितनी बड़ी रिपोर्ट उनके डिटेल्स कॉन कॉल के बाद और उनकी डिटेल्स जो आ रही है एफएमसीजी कंपनीज की, उनमें भी क्लियर आ रहा है कि जो बिगर एसक्यूएस हैं उसके कंपैरिजन में स्मॉलर एसक्यूएस की ग्रोथ, वॉल्यूम ग्रोथ ज़्यादा देखने को रही है। क्या ये इन्फ्लेशन का ट्रिगर है कि लोग प्रेफर कर रहे हैं छोटे पैकेट ज़्यादा खरीदना? So the reasons for it थोड़ा difficult है to actually perfectly ascertain, थोड़ा conjecture है कि जी पैक साइज कम होते जा रहे हैं, that the shrinking of the pack itself is real. It has been happening for a long time, continues to happen. We've also tracked in which specific categories it happens a lot more. So वो real है, but we're also seeing that people are buying more of those pack size. Now, on which categories are they going from an affordability standpoint, or actually going from discretionary? तो अभी तो food size पे दिख रहा है, अगर staples में दिख रहा है, तो there's actually a lot more around what we are spending and comfortable spending on things that are more affordability related.
तो उसको एक्सटेंड करना भी देखना पड़ेगा कि हाउ द नेक्स्ट 6 months एक्चुअली गो फ्रॉम अ कंजम्पशन स्टैंड but the basic health around essential commodities that become more critical to actually watch. So the grammage reduction is real, Josh. The shrinking of the pack size is real, continue to happen. The inflation is real. I think in the last 2 or 3 quarters, if you start looking at CPI, you might see some arresting. और देखना पड़ेगा कि वो कितना extend होता है to the rest of the year to actually really figure out what the last quarter of the year will look like. That is still to be, that story is yet to be written. ओके मिस्टर पिल्लाई, आपका बहुत शुक्रिया हमारे साथ अपनी इस खास रिपोर्ट पर अपनी एनालिसिस शेयर करने के लिए और एफएमसीजी प्ले में किस तरह के डिमांड ट्रिगर्स आगे नजर आ रहे हैं इस पर विस्तार से हमसे बातचीत करने के लिए। हैव अ नाइस डे टू यू। तो ये थे सतीश पिल्लाई, नीलसन आईक्यू इंडिया के एमडी। उन्होंने विस्तार से एक रिपोर्ट निकाली एफएमसीजी पर और डिमांड आउटलुक खास तौर से इन्हें काफ़ी मजबूत नज़र आ रहा है। ऑफकोर्स अनलॉक थीम जिस तरह से ऑफिस शुरू होते हुए दिखे, उसके बाद छोटे पैकेट साइज़ की डिमांड भी बढ़ती हुई दिख रही है और आगे भी डिमांड ग्रोथ जो है वो कायम रहने की संभावना यहाँ पर नजर